once again. Good morning students, this is Naresh Shrivastava, your science teacher. Today's our topic is sowing of seed. Sowing of seed is the most important process of agriculture in which the seed are sown in the soil. Before sowing, the seeds are being selected. So the first step of sowing of seed is selection of seed. To separate the good seeds from the damaged one, farmer use a simple technique ऑफ सीड फ्लोटेशन. आइए इसे एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू जान लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टेकन सम सीड्स ऑफ व्हीट एंड अ ग्लास ऑफ वाटर. आइए देखते हैं कि किस तरह से हम डैमेज सीड्स से अच्छे सीड्स को अलग करते हैं. हम इसमें जो व्हीट के सीड्स हैं इसको हम पानी में डालेंगे. तो ये देखते हैं क्या होता है. नाउ यू कैन सी हियर जो बेस्ट सीड्स थे वो नीचे चले गए हैं और जो डैमेज सीड्स थे वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. मैं इसको दूसरे व्यू से दिखा रहा हूँ आपको. नाउ यू कैन सी हियर जो बेस्ट सीड हैं वो पानी में नीचे बैठ गए हैं और जो डैमेज सीड हैं वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. ओके, इस तरह से फ्लोटिंग टेक्निक की मेथड से फार्मर्स डैमेज सीड को अच्छे सीड से अलग कर लेते हैं. आफ्टर सेलेक्शन ऑफ गुड सीड दे आर बीइंग शोन इन द सॉइल विद डिफरेंट टेक्निक्स. In traditional method of seed sowing, a funnel shaped instrument is used, जिसमें एक तरफ से सीड भर के उसके बाद खेतों में वन बाय वन उसे मूव कराया जाता था जिससे सीड धीरे धीरे करके पूरे खेत में फैल जाता है. See the funnel which is used in seed sowing. In modern technique, the seed drill is an equipment which is most widely used, successful and beneficial. The seed drill look like this. Now see this video and understand the complete process of sowing of seed. Once plowing is done, next step is sowing. Before sowing, farmers select good quality seeds to get high yields. Have you ever noticed your mother putting some grains in a vessel and pouring some water to it? What happens after a few minutes? Some seeds start to float. What is the reason behind this? Some damaged seeds float on water because they are hollow and hence lighter. Actually, this is a good method for separating good, healthy seeds from the damaged ones. Now let us see what are the tools used for sowing seeds. Look at this farmer. He has a funnel-shaped tool for sowing seeds. Observe them closely. What is he doing with this tool? Yes, he is filling seeds into the funnel and passing them down through the sharp ends of the pipe to get them seeded in the soil. This is a traditional method and very easy. Nowadays, farmers use modern seed drills for sowing with the help of tractors. I'm sure you are wondering how this seed drill works. It sows the seeds uniformly at proper distance and depth, ensuring that seeds get covered by the soil after sowing. This process also saves a lot of time and labor. I think you have got the concept of seed sowing. अगर फिर भी कोई confusion हो, then you can ask me on my personal WhatsApp number. Thank you.